It's the story that India Today first broke last week and has forced the entire national media to pick up a story that they would have otherwise probably ignored. Images of students in hijabs, images of students in saffron shawls taking to the streets of different places in coastal Karnataka, protesting against what they say is an arbitrary, communally charged ban on students wearing hijab to college. Protests have broken out across the state. It's now a full-blown hijab versus saffron fight. It's become that, even as the government has made it very clear that school and college uniforms are the norm, they must be followed, and there will be no exceptions whatsoever. The state of Karnataka divided sharply over the uniform diktat in educational institutes. Days after a handful of girl students were stopped from entering their schools in Udupi because of wearing a hijab, the controversy has snowballed into a saffron versus hijab war. On your screens are the protests that have broken out across Karnataka as school and college students wore saffron shawls, saying if the hijab is allowed, then so is saffron. They were all turned away by the administration. Juxtapose this with the counter-hijab protests in the state as activists gathered to back the girl students in Udupi's Kundapura. Hijab हमारा हक है, क्योंकि आप आज़ाद हिंदुस्तान में हम हैं, तो हमारा हक है, हम बुर्का पहन सकते हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं. अगर आपको उसके लिए भी अगर यूनिफॉर्म रखना है, कलर का रखना है, तो वो रखिए आप. हम उसके लिए राजी हैं. अगर जो हिजाब का कलर है यूनिफॉर्म से मिलता जुलता होना चाहिए, तो वो उसके लिए राजी है हम, लेकिन हिजाब तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. The students too have refused to back down. They turned up again in their hijabs even as the school pasted the government notice on uniforms at the gate. जी हम हैदराबाद से हैं. हम हैदराबाद से कर्नाटका के जो भी जो राइट्स वायलेट करे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हिजाब, और वो लोगों ने जिस तरीके से उनको कॉलेज के बाहर मना कर दिया कि हिजाब के साथ वो अंदर नहीं लिख सकते एग्ज़ाम, इट इज़ कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. The college administration has levelled a sensational PFI-SDPI link to the hijab controversy. Actually, this is not an issue. I come to speak the notice that it was an issue created by some of the organizations, CFI and PFI, to divert the attention from the education system of our Udupi. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಹೋಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತಂತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. The government meanwhile has made its stand clear. There will be no relaxation in the rules laid out about uniforms in educational institutes. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ SDM ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಹರಿಸಿದೆ. ಮಿಲ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಮಿಲ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲೇನು ರೂಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. But the hijab versus saffron debate has descended into an ugly communal fight between netas. ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈಗ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇನೋ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಇವತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರತ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಕಡಿಲಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ? ನಿಮಗೆ ಉರ್ದು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವಾಗೆ. With Nolan Pinto and Shivamurthy, Bureau Report, India Today. And just take a look at what different parts of coastal Karnataka looked like today. Between students wearing saffron shawls to students in their hijabs. They were not studying, they were not on campus, they were not allowed back into their classrooms. They were outside hitting the streets and protesting. Different parts of Karnataka, from Mandya to Udupi to Shivamogga to Hassan to Belagavi. Students have hit the streets in protest. It's become a hijab versus saffron shawl protest, with students demanding their right to religious identity and to be allowed back onto campus. Joining me live now is Amreen Tehran. She's a student who has been part of these protests. She insists on wearing a hijab and being allowed back onto campus in the college where she studies in Udupi in coastal Karnataka. Amreen, my first question to you: the government has issued orders to follow a proper uniform. Why are you still protesting? What's your next step? इतने साल से वो ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं था ना कि यूनिफॉर्म कंपलसरी वो का अचानक से 2 महीना रहने में यूनिफॉर्म कंपलसरी और हिजाब काटना तुम्हें वो को आया तो हमें क्या करने होते हैं? हमारे कने क्या भी रास्ता नहीं, हमने एजुकेशन भी होना और हिजाब भी इतने साल से हिजाब डालने को हमें एजुकेशन सीखने को होते, हमारे सीनियर से भी सीखे थे, हमें भी सीखती वो को हम इतना चीज एक सरकार का ने रिक्वेस्ट कर ले को ऐसे कि हमने एजुकेशन हिजाब डाले को एजुकेशन सीखने दियो वो को। अमरीन, आपके क्या एग्जैक्टली बताइए, आपका क्या डिमांड है अभी? इतने साल से हमें यूनिफॉर्म डालने को सीखने को होते हैं ना, हमारे डिमांड ये कि हमें इतने साल से सीखने को होते हैं, सो अचानक ऐसा रूल्स आको तुम्हें अब भी हमें चेंज करने होता नहीं ना, हमें क्या कलर ड्रेस डालने को आको हिजाब डालने को आते नहीं ना, कंपलसरी यूनिफॉर्म कंपलसरी डालने को आती है, एक दिन भी चुकाते नहीं हमें, उसके साथ एक रिक्वेस्ट की हिजाब डालने को आती, टच इतने साल से वैसे चलने को आता ना, अचानक से ऐसा क्यों रूल्स ला सकते हैं वो, इतना क्वेश्चन। अमरीन, हाईकोर्ट, कर्नाटका का जो हाईकोर्ट है, कल ये मुद्दा उनके सामने आएगा, वो रूल करेंगे, क्या आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट से ऑर्डर आया तो उसका सभा क्यों भी गवर्नमेंट का ऑर्डर आता ही बोलते हैं ना, हम तब तक वेट करते हैं, तब तक हम हिजाब डाल को अंदर जाको एजुकेशन सीखते, गवर्नमेंट का ऑर्डर आए बाद में क्या करना वो को हम इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है अमरीन, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ मंत्री लोग भी बोल रहे हैं कि अगर आप यूनिफॉर्म का पालन नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी और कॉलेज में जा सकते हैं। क्या ये एक ऑप्शन है आप और अपने मित्रों के लिए? क्या ये एक ऑप्शन है कि आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके आप कहीं और जाके पढ़ लेंगे? अभी अचानक से हमें 2 महीने रहने में एजुकेशन को, इतने साल से हमें फीस बंद को, हमें इतना सभी सीख को, अचानक से एग्जाम नजदीक आने में कॉलेज छोड़ने होता नहीं ना, वैसे हमना टीसी भी लेको जाने होता नहीं हमना, अचानक से ऐसे 2 महीने रहने में रूल्स आए सो उन्होंने फर्स्ट स्टार्टिंग में करते तो हमें कहते भी सोचते थे ऐसे कि हिजाब अलाउड है, कॉलेज को जाको मिलते थे, ऐसा कुछ भी सोचते थे, अचानक 2 महीना रहने में ऐसा रूल्स लेकर आए तो हमना क्या भी करने होता नहीं, टीसी भी लेने भी होता नहीं, हमारा एजुकेशन का सवाल ना। Okay, thank you Amreen for speaking to India Today. In fact, a Congress MP is speaking in the Lok Sabha right now on this hijab controversy. Let's listen in. This is live from the Lok Sabha. Attack here. If they see a Muslim girl in her hijab, they will stop her from education. Where are they taking our India?
हाँ बात कीजिए अपनी बात कर हाँ क्यों Sir, where are we taking our India? We cannot lose our diversity, sir. I kindly request to the Education Minister to interfere in this issue to ensure the constitutional rights of the caste that is real. Sabka Saath, Sabka Vikas. As my leader Rahul Gandhi said, Saraswati Devi gives education to all. This is no difference with religion, caste, dress or language. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. प्लीज 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 ये तरीका ठीक नहीं है आपका प्लीज बैठिए मैं आपको मौका प्लीज आपस में नहीं शशि थरूर जी हाँ ठीक है मुद्दा उठा दिया आप भी प्लीज हाँ 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 मैं मौका दूंगा आपको प्लीज बैठिए आपको मौका दूंगा प्लीज बैठिए कटियाल जी मौका दूंगा हाँ आप हाँ हो रहा है जो हो रहा है आपके उनको बोलने दो आप शशि थरूर जी को नहीं बोलने दे रहे ये योजना मत बनाओ निरंजन जी शशि थरूर जी को बोलने दो शशि थरूर जी सर अलग सब्जेक्ट है बैठिए प्लीज Sir, I wish to draw the attention of the Honourable Minister of Earth Sciences to the lack of the Indian Meteorological Department's preparedness for weather forecasts and its recent failure to issue red alerts for heavy rain in a timely manner in Kerala. Hijab issue in Parliament saying that this is not a reflection of Sabka Saath, Sabka Vikas, and that diversity of the country needs to be maintained. In a short while from now, we'll also have the Prime Minister speaking in Parliament, of course, on a separate issue. But the hijab issue has just erupted in India's Lok Sabha. From faraway coastal Karnataka, it has now found an echo, a loud echo in Parliament as well. On the one hand, you have the students. The other hand, you've got the college administrations, and then you've got the Karnataka Bommai government, which says rules are rules, they have to be followed. But the students in their hijabs are asking, why has this rule suddenly come up just 2 months before the exams? We've been going in our hijabs to class all this while. What has changed after all this while, just 2 months before the exam? How can you expect us to suddenly change our ways, our religious identity just 2 months before the examinations? Why are you disrupting it? Well, as that story simmers in coastal Karnataka, it has emerged in the Lok Sabha. It's been taken up in the Lok Sabha by a Congress MP. But these are the images that are coming in of the students in different parts of Karnataka right now.